हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएमएस एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। So what is defense mechanism? The term defense mechanism refers to a predominantly unconscious self-protective process that seeks to shield the ego from intense feelings or affect and impulses. So it refers to a predominantly unconscious self-protective process है जो कि सीख करता है शील्ड करना अपने ईगो को from intense feeling or affect and impulses. Additionally, these intrapsychic processes modify, nullify, or convey painful affects or tendencies so they can be tolerated consciously. Defense mechanisms mostly operate at the subconscious level of awareness. So people are not aware of what they are doing. So ये subconscious level पे होता है और people aware नहीं रहते वो कर क्या रहे हैं कैसे cope up कर रहे हैं but actually वो defense mechanism का use करते हैं. So this was the introduction meaning of defense mechanism. अब हम देखते हैं टाइप्स. तो डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स हम वन बाय वन डील करेंगे. तो पहला है एक्टिंग आउट. एक्टिंग आउट रिफर करता है रिपीटिंग सर्टेन एक्शंस टू वर्ड ऑफ एंजाइटी विदाउट वेइंग द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन. तो ये रिपीट करना था सर्टेन एक्शन ताकि अपनी एंजाइटी को हम दूर कर सके और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर सके. जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड गेट्स एंग्री विथ हिज वाइफ एंड स्टार्ट स्टेइंग एट वर्क लेटर. सो अपनी वाइफ से गुस्सा है हस्बैंड, तो वो उस चीज को कन्फ्रंट करने की जगह वो क्या करता है अपनी वर्क प्लेस पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है या अपने घर आने का टाइम को डिले करता है ताकि वो वाइफ से को इंटरेक्ट ना कर सके या अवॉइड डिले कर सके. सो दिस इज एक्टिंग आउट. Second is compensation, which is also called substitution. It involves trying to make up for feeling of inadequacy or frustration in one area by excelling or overindulging in another. For example, adolescents take up jogging because he failed to make the swimming team. तो इसको हम बोलते हैं substitution, जिसको compensation बोलते हैं. Next है denial. A person in denial protects himself from reality, especially the unpleasant aspects of life, by refusing to perceive, acknowledge or face it. तो deny मतलब मना करना, reality जो सामने है उसको accept नहीं करना. By refusing to perceive, acknowledge or face it. Example, a woman newly diagnosed with end-stage cancer says, I will be okay, it's not a big deal. So this is denial. Displacement. Next is displacement. In displacement, a person redirects his impulses, commonly anger, from the real target to a safer but innocent person because that target is too dangerous. तो displacement क्या करता है, पर्सन जो है अपने इम्पल्स को रियल टारगेट से हटा के सेफर या इनोसेंट पर्सन की तरफ कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट येल्ड एट अ नर्स आफ्टर बिकमिंग एंग्री एट हिज मदर फॉर नॉट कॉलिंग हिम. सो डिस्प्लेसमेंट में हम अपना जो फ्रस्ट्रेशन है या जो भी इम्पल्सेस है वो जो रियल टारगेट है उसकी जगह किसी और पे कर देते हैं, अपना गुस्सा किसी और पे उतारना. दैट इज डिस्प्लेसमेंट. फैंटेसी. इट रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ unrealistic or improbable images as a way of escaping from daily pressure and responsibilities or to relieve boredom. So ये create करना unrealistic images का ताकि हम अपनी daily जो pressure और responsibilities से दूर हो सके या खुद को डाइवर्ट कर सके, डिस्ट्रैक्ट कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में डे ड्रीम excessively, watch TV for hours on end, or imagine being highly successful when he feels unsuccessful. Engaging in such activities makes him feel better for a brief period. So this is denial, displacement and fantasy. Next है identification. Identification क्या है? Defense mechanism. The person unconsciously adopts the personality characteristics, attitude, values and behaviors of someone else, such as hero. He emulates and admires as a way to allay anxiety. He may identify with a group to be more accepted by them. For example, adolescent girl begins to dress and act like her favorite pop star. So identification में person क्या किसी role model की तरह खुद को ढालने की कोशिश करते हैं. So this is identification. Next है intellectualization, also called isolation. It refers to hiding one's emotional responses or problems under a facade of big words and pretending there is no problem. Example, failing to obtain a job promotion. A worker explains that the proposition failed to meet his expectation for climbing the corporate ladder. So this is intellectualization, जिसमें हम अपनी इमोशनल रिस्पॉन्स को हाइड करते हैं.
Introjection. A person introjects when he adopts someone else's values and standards without exploring whether they fit him. किसी और के वैल्यूज को स्टैंडर्ड्स को हम खुद में ढालने की कोशिश करते हैं, भले ही ये सोचते नहीं कि वो हमारे नेचर के अनुसार है कि नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल बिगिंस टू फॉलो स्ट्रिक्ट वेजिट डाइट फॉर नो अपैरेंट रीजन. किसी ने कह दिया और उसको हमने मान लिया और हमने स्टार्ट कर दिया वेजिटेरियन डाइट. उसका पर्पस क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन हमने किसी की बात सुन के हम उसको फॉलो करना चालू कर देते. सो दैट इज इंट्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन. The person attributes to others his own unacceptable thoughts, feelings and impulses. So इधर हम just introduction का opposite है. प्रोजेक्शन में हम किसी और पे थोपते हैं अपनी बातों को, opinions को. For example, a student fails a test, blames his parents for having the television on too loud when he was trying to study. So वो अपने failure का जो blame है वो किसी और पे डाल देता है, पेरेंट्स पे डाल देता है, क्योंकि टीवी के साउंड की वजह से वो पढ़ नहीं पाया और इस तरह से वो फेल हो गया. So this is projection. Rationalization occurs when a person substitutes acceptable reason for the real or actual reasons that are motivating his behavior. The rationalizing patient makes excuses for shortcomings and avoid self-condemnation, displacement and criticism. For example, an individual states that she didn't win the race because she hadn't gotten a good night's sleep. So this is rationalized karna. Reaction formation. The person behaves the opposite of the way he feels. Love turns to hate and hate into love. So reaction formation. The person behaves opposite of what he feels. Regression. Under stress, a person may regress by returning to the behavior he used to in earlier, more comfortable time in his life. Example, a previously toilet-trained preschool child begins to wet his bed every night after his baby brother is born to gain attention from the parents. So this is regression. स्ट्रेस में हम अपनी प्रीवियस जो आदत है उसको हम वापस से अपने जीवन में लेकर आते हैं. Repression. It refers to unconsciously blocking out painful or unacceptable thoughts and feelings, leaving them to operate in the subconscious. For example, a woman who was sexually abused as a young child can't remember the abuse but experiences uneasy feelings when she goes near the places where the abuse occurred. So repression, हम जो पेनफुल इवेंट है या थॉट्स हमारी लाइफ में हुआ है उसको हम सबकॉन्शियस एरिया में हम दबाने की कोशिश करते हैं, बट इसी तरह से हम सेम सिचुएशन को फील करते हैं तो हमें फिर से वो पुरानी पेनफुल यादें याद आ जाती हैं. So this is repression, blocking out painful or unacceptable thoughts and feelings. Sublimation. What is sublimation? Sublimation, a person transforms unacceptable needs in acceptable ambitions and action. The person क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है unacceptable needs in acceptable actions and action. For example, he may channel his sex drive into his sports or hobbies. So एनर्जी को उसने यूज किया स्पोर्ट्स या फिर हॉबीज को. Undoing. In undoing, the person tries to undo the harm he feels he has done to others. For example, a patient who says something bad about a friend may try to undo the harm by saying nice thing about her and by being nice to her and apologizing. So undoing में person क्या करता है? अगर उसने किसी पर गुस्सा हो जाए, किसी को मार दिया, तो वो फिर से उसे माफी मांगता है या उसके बारे में अच्छी सी बातें करता है. तो उस तरह से वो अपनी किए के लिए पछताता है, रिग्रेट करता है और उसको अनडू करता है. So this is undoing. So this was about the topic defense mechanism. I hope you like the topic. If you like, then please share feedback in the comment section and like, share and subscribe. Thank you.